Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. We start with technical and derivatives outlook. So, in yesterday's session, we saw that Nifty has made a new all-time high at 18,614.25 levels. So, this is the new level, 52-week high as well as a new all-time high. All-time high. The Nifty has now closed even with a higher high close. So eventually, what we were saying, ki Nifty should be heading higher. We believe the Nifty is now heading towards 18,800, 19,000 for the next couple of weeks. So bias is positive for the Nifty. So having said this, the lower side demand now shifts at 18,300. So there are series of put writing at 18,300, 18,200, and 18,100. So this will act as a multiple support levels from the Nifty point of view. So higher side 18,800 and 19,000 will be the higher side target, and lower side 18,300 will be the immediate supports for the Nifty. Coming to Bank Nifty, when the Bank Nifty has rallied, traded positive in yesterday's session, but then day before yesterday, the Bank Nifty has made a high of 43,339. So it is taking some breather profit booking at those levels. What we are observing in Bank Nifty is like over the last 38 trading sessions, the Bank Nifty has rallied close to 16% from the lows of 37,386. So after this 16% of rally in the Bank Nifty, it is witnessing some amount of profit booking. So the bias is positive for the Bank Nifty, but for the week specific, we think that there can be some sideways consolidation or sideways move in the Bank Nifty, which can take it back to 42,500 or maximum 42,000. So this is a healthy correction. This correction should be viewed as a buying for the Bank Nifty. We are extremely bullish on the PSU banks like SBI, Canara Bank, and Bank of Baroda. So that in case if the dip comes, then that should be used as a buying opportunity for this counter, followed by private banks like ICICI and Axis. They are the positive counters in the Bank Nifty. So even IndusInd Bank to some extent is looking very positive or judged. So whenever this kind of correction comes, we should be having taking a long positions. The levels for the Bank Nifty is immediately 42,500, then 42,000, and on the higher side 44,000 and 44,500. So maybe the higher side may not be tested during this current week, but maybe the next 2 or 3 weeks after this week, we should be heading for that levels on the higher side. So bias for both the Nifty and Bank Nifty is positive, and we should be adding long position whenever we see any kind of decline. Coming to derivatives data. So yesterday the Nifty futures had a fresh long trades. That is an increase in open interest by 5.84%, and the net additions by 7.29 lakh shares. The put call ratio has also recovered from 1.18 to 1.28 levels, adding to this trend. The major additions in the call and put writing were seen in at 19,000 call option by 77.75 million shares, then 18,800 call options by 63.21 million shares. On the put front option, 18,500 put by 10.58 million shares, and 18,400 put by 74.69 million shares. Coming to Bank Nifty, even Bank Nifty added a long position, but there was a very marginal long position. The open interest increased by 0.98%, which was the addition of 30,000 shares. The put call ratio is still below 1. Eventually, before that, it was 0.86. It has scaled up to 0.88. So the Bank Nifty has to scale above 1 ratio to gain the strength and the momentum. The major additions were seen at 43,000 call option by 56.44 million shares, and then 43,500 call options by 22.03 million shares. And on the put front option, 43,000 put by 44.93 million shares, then 42,500 put options by 23.87 million shares. The top three long build-ups seen in yesterday's session was Apollo Tyres, Delta Corp, and Indiabull Housing Finance, and the three short positions were Shriram Transport Finance, Vedant, VDL, and Laurus Lab. So, lastly, the view on crude. So, crude has been correcting for the last
couple of days. So eventually the crude started correcting from 92 levels, and the day before yesterday the crude made low of 80.79. So what we believe that if the 80 levels on the 80 levels on the crude is broken down, then it opens up the further downside to a 68 level. So that would be that will be a bullish for the tire stocks and the paint stocks. So already the stocks like Apollo Tires, Balkrishna Industries are looking positive on charts. Asian Paints and Berger Paints are looking positive. So eventually, maybe after this 1 week, from the correction which we saw in crude from 92 to 80, there will be some pullback, and again we expect it to correct lower, and below 80 levels there will be a further correction. So that will be even positive for the markets. Beside this, oil and gas and infra are the counters which are looking positive on charts. Within the infra space, L&T, Reliance, and Bharti are looking positive, so we need to keep a watch on that. Lastly, on the FI data, so FIs is again in the index future, they are gone long by 15,000 contracts. The net long short ratio is 72%. So they are maintaining a long position in the market. Cash data, FIs are gone long by they added 935 crores, and DI also added by 87 crores. So both the data are positive. So that's all from my end. I will hand over to Devang for the further research updates. Thank you, Brijesh. So few news from my end. So TVS has, going to launch an electric motorcycle, which is expected to be launched in January 2023, and has plans to open 10 experience zones during the years. Company launched its F77 price in the range of 3.8 to 5.5 lakhs, equipped with 10.3 kWh battery, and claims to offer the longest range of any electric two vehicles in India. From second year of production, the company will export its products to Europe and US. Ultraviolet is targeting 15,000 units in the first year and 50,000 to 60,000 units in second year. The plant is capable of scaling it to 1 lakh units annually, and TVS Motor holds around 29.48% stake in this electric manufacturing vehicle firm. Second news is RBI highlighted that credit growth is at 17.2% on an annual basis in September, from 14.2% in Q1 FY23 and 7% a year ago. The credit growth has remained broad-based, with all population and banks groups recording double-digit annual growth. According to release, growth in terms of deposit rose to 10.2% in September 2022 from 6.4% a year ago. The private sector banks have been outpacing public sector banks, foreign banks, and regional rural banks in deposit mobilization. All India credit deposit ratio has increased further to 74.8% in September 2022 from 17.5%. We believe the credit growth data are encouraging and are expected to sustain over next couple of months, led by strong corporate loan inquiries, as highlighted by the banks in their calls. Also, deposit growth is still lagging and is yet to catch up pace with growth in advances. Overall, we remain bullish on banking sector, and our picks are HDFC, ICICI Bank, Federal Bank, and City Union Bank. Another news on HCL Technologies is HCL Technologies has won a multi-year deal to digitally transform its SR Technic operations. This company is into MRO, which is maintenance repair of civil aviation. As a part of this deal, HCL will deploy SAP on Microsoft Azure, which will help in simplifying their business operations. Financial details of this deal is not disclosed, and a positive development for HCL in future earnings. We have a buy rating on the stock with a target price of 1095. In terms of NBCC, the company has received a work order worth rupees 271 crores in two projects of Amrapali Group. Secondly, Lumax Industries has set a board meeting on December 7th to consider and approve the proposal for setting up a manufacturing unit in Chakan. Third news is Gopal Ladda as Chief Financial Officer of Kolte Patil has resigned, and Hiroda Chandra Jena has been appointed as CFO of the company with effect from November 29.
And the last news is Kotak Mahindra Bank. Kotak Alternate Asset, a division of Kotak Investment Advisor, plans to raise $1 billion to invest in data center business. That's it from my end. Over to you, Bridges. Yeah, thank you, sir. Good morning, everyone. We'll further continue with more updates. Starting with Indigo. Indigo is going to wet lease its wide body aircrafts. That is a Boeing 777. And this is from the sources they had said that they are going to wet lease from Turkish Airlines. That would be near about 7 aircrafts for the period of 3 months, and will with the ability to extend this arrangement also. Secondly, Honda car is going to tie up with Maruti Suzuki Toyotsu for vehicle scrapping. This initiative will also help Honda to allow its customer for an end-to-end solution for the scrapping of the end of life of vehicles. And with this tie-up, the Japanese automaker is also assisting customer to get the best value of their ELVs and facilitate hassle-free deregistration and issue of certificate of deposit instruction through a dealer partner, that is Honda Cars Limited. S&P Global Rating had cut its India's economic growth forecast to 7% for FY23, but said that the domestic-led demand and economy will be less impacted by the global slowdown also. Earlier, they had projected for 7.3% for 22-23 and 6.5% in the next fiscal, that is 23-24. But looking to the global slowdown, will have less impact, and they have trimmed their forecast for 7%, and for 22-23 to forecasted for 6%. But if you see, Indian economy has grew by 8.5% 2021. Its quarterly update for the Asia Pacific zone. L&T said that the hydrocarbon business arm of L&T has received a significant contract that is of from 1,000 to 2,500 crore from the EPC major. And this would be the India's first contract for decommissioning of offshore facilities from British gas exploration production in India, part of Shell PLC. For NDTV said that the entity backed founders by the Adani Group has taking over the step closer by taking the control over 29.18% stake in its group. Adani is also conducting its open offer that is run between November 22 to December 5 for additional 26% stake in NDTV. With respect to Lupin said that its Brazil-based unit has inked a pact to acquire rights of 9 products from a subsidiary Bosch Health Companies. The company wholly owned subsidiary Brazil in Medicoma Industry Pharmaceutica, and has signed a definitive agreement to acquire all the rights of the 9 medicines, respectively, and will acquire rights to products including Limbetrol, Marinine, Dalmatrol from central nervous system related conditions also. JK Cement said that it has commenced in the operation at its 4 million tons capacity, annual capacity grey cement grinding capacity in central India. With this, the company's grey cement capacity has risen to 18.7 MTPA. This consistency is addition to both to the volume growth outlook also. And company aims to reach 25 MTPA grinding capacity by FY25. Aditya Birla Fashion Group has picked and significant minority stakes in 8 digital lifestyle brands for 290 crores. This includes Perilish, Wakef, Juneberry, Netelin, Naughty, Novero, Urbano, and Verdo. And the count of the sum has not been disclosed, or the stake has not yet been picked up for those stakes. NBCC said that the construction firm had received an order of 271.62 crore from the Amrapali Group. And the company also informed that the 42.44 crore for the construction balance work of project for the Amrapali corporate hub at IMT Manesar, Gurugram in Haryana. Dredging Corporation says that they have planned to foray into foreign dredging market, and the United States has been taken to set up foot once again in the foreign waters that is likely to materialize. DCI has also already has signed an executive agreement with the dredging contractor for the Mongla Port, Bangladesh. So that's it from mine. I'll hand over to Shilina for English. थैंक यू सर गुड मॉर्निंग एवरीवन अभी हम लोग ये कॉल को एक बार में कर लेते हैं फर्स्ट अपडेट है टीवीएस के ऊपर टीवीएस अभी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल उसमें फॉर्म है अल्ट्रा वॉलेट उसमें बैक कर रहा है और वो लॉन्च करेगा प्रोडक्ट जनवरी 2023 में उनका प्लान है कि वो ओपन करेंगे 10 एक्सपीरियंस स्टोर ये ईयर में और कंपनी ने अभी तक लॉन्च किया है उसका F77 उसकी जो प्राइस रेंजिंग है वो है 3.8 से लेके 5.5 लाख का और वो इक्विप है जो मतलब F77 है वो इक्विप है
10.3 किलो मेगा की जो बैटरी है उससे, और कंपनी क्लेम करे कि वो ऑफर कर रही है लॉन्गेस्ट रेंज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इन इंडिया, और जो ओवर 300 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे चलेगी। फर्दर सेकेंड ईयर कंपनी का जो प्रोडक्शन होगा वो एक्सपोर्ट होगा प्रोडक्ट्स यूरोप और यूएस में, और ये अल्ट्रावायलेट है वो टारगेट करिए कि 15,000 यूनिट फर्स्ट ईयर में और 16,000 यूनिट सेकेंड ईयर में। सो प्लांट का कैपेसिटी है कि वो स्केल अप कर सकती है 1 लाख यूनिट्स एनुअली। सो टीवीएस मोटर का होल्ड है 29.48 स्टेक इन अल्ट्रावायलेट कंपनी में। नेक्स्ट अपडेट है आरबीआई का क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर हाईलाइट आया, उसमें 17.2 एनुअल बेसिस पे सितंबर में ग्रोथ देखी गई है, जो पहले 14.2% थी Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 में। क्रेडिट ग्रोथ जो है वो ब्रॉड बेस में हम लोग पॉपुलेशन वाइज और बैंक ग्रुप से रिकॉर्ड की है, वो डबल डिजिट ग्रोथ है एनुअल ग्रोथ। और प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है उसमें पब्लिक आउट पैकिंग किया है पब्लिक सेक्टर बैंक से, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक से। और जो ऑल इंडिया क्रेडिट डिपॉजिट का रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है 74.8% सितंबर 2022 में, जो इसके पहले क्वार्टर में 73.5% था, और ईयर अगो मतलब लास्ट टाइम 17% था। ओवरऑल हम लोग बुलिश है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और हमारे जो टॉप है वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक एंड सिटी यूनियन बैंक ही है। नेक्स्ट अपडेट है एचसीएल टेक्नोलॉजी, उनको मल्टी ईयर डील का जो मल्टी ईयर डिजिटल ट्रांसफॉर्म का एक ऑर्डर है वो मिला है। तो वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म एसआर टेक्निक ऑपरेशन करेंगे, और ये एसआर टेक्निक जो कंपनी है उनका जो मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे सिविल एविएशन इंडस्ट्री को। और ये पार्ट का जो डील है उसमें कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगी सैप और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, जो हेल्प करेगा सिंप्लीफाइंग बिजनेस ऑपरेशन के लिए। और फिनेंशियल डिटेल्स जो है डील के अभी भी अनडिस्क्लोज ही है, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है एचसीएल टेक्नोलॉजी के अर्निंग फ्यूचर के हिसाब से। तो करंटली स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय रेटिंग है, जो टारगेट प्राइस है वो 1095 है। नेक्स्ट अपडेट है एनबीसीसी इंडिया है, उनको एक कंपनी को वर्क ऑर्डर मिला है, उसकी जो वर्थ है वो 271.62 करोड़ की है, जो ये 2 प्रोजेक्ट्स है आम्रपाली ग्रुप से मिले हैं। नेक्स्ट अपडेट है रूमैक्स इंडस्ट्री के ऊपर, जो उनकी जो बोर्ड मीटिंग है दिसंबर 7 को है, जो अब कंसिडर मतलब ये बेसिकली बोर्ड मीटिंग है वो कंसिडर और अप्रूवल के लिए है। जो न्यू मैन्युफैक्चर यूनिट वो सेटअप करने वाले हैं झारखंड में पुणे में, और उनका जो फंडिंग ऑप्शन है उसके लिए ये मीटिंग है। द नेक्स्ट अपडेट है कोटे पाटिल के ऊपर, भोपाल लद्दाख जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उन्होंने रिजाइन किया है, और ये उनका जो इफेक्टिव बिजनेस आवर्स है, क्लोजिंग बिजनेस आवर्स है November 28 है, और उनको जो न्यू चंद्र जेना है उनको अपॉइंट किया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और वो फ्रॉम November 29 से कंपनी का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट अपडेट है कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, कोटक अल्टरनेट असेट है उनका जो डिवीजन है कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लान का, उन्होंने प्लान किया है कि वो रेज करेंगे $1 मिलियन जो इन्वेस्ट करेंगे डेटा सेंटर बिजनेस में। नेक्स्ट अपडेट है इंडिगो के ऊपर, इंडिया की जो एयरलाइन है उन्होंने बोला है कि वो वर्क कर रही है फाइनलाइजिंग उनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडक्टिंग बोइंग 777 एयरक्राफ्ट का, जो सो कॉल्ड वेट लीज बेसिस पे विंटर शेड्यूल में लिया है। और ये वेट लीजिंग रेफर करता है कि प्रैक्टिस लीजिंग के एयरक्राफ्ट में इसके अलाउंग क्रू और फ्लाइट प्लेन करेंगे, और वो सर्विस ऑन बोर्ड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है S&P ग्लोबल रेटिंग है, उन्होंने इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फोकस किया है 7% फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। तो बेसिकली जो पहले S&P ग्लोबल रेटिंग है उन्होंने मंडे बोला कि उनका इंडिया का जो इकोनॉमिक फोकस था करंट फिजिकल ईयर के लिए वो 7% था, पर डोमेस्टिक डिमांड लेड करिए इकोनॉमी को, जो लेस इम्पैक्टेड है ग्लोबल स्लो डाउन के हिसाब से।
और सितंबर में प्रोजेक्ट किया था इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगा 7.3% से 2022-23 में और 6.5% नेक्स्ट फिस्कल ईयर 23 और 24 के लिए। तो ग्लोबल स्लो डाउन के कारण ये मतलब डोमेस्टिक डिमांड है वो इकोनॉमी में अच्छी खासी इंडिया में हो रही है, तो लेस इम्पैक्ट कर रहा है ग्लोबल स्लो डाउन। और इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगी 8.5% से 2021 में। तो अभी क्वार्टरली इकोनॉमिक अपडेट एशिया पैसिफिक और S&P ने बोला गया है। तो डोमेस्टिक डिमांड रिकवरी कोविड के बाद आ गई है और ये ग्रोथ के नेक्स्ट ईयर में जो ग्रोथ आने वाली है उसको सपोर्ट करेगी। देन नेक्स्ट अपडेट है एलएनडी के ऊपर। एलएनडी का जो हाइड्रोकार्बन बिजनेस है लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो बेसिकली उसका जो प्रोजेक्ट है वो उसकी जो वर्थ है 1000 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ है। ये ईपीएस मेजर है। उन्होंने बोला है कि बिजनेस जो कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है वो इंडिया का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है। वो डिकमीशन करेगा ऑफशोर फैसिलिटीज ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन इंडिया में, और ये पार्ट है शेल पीएलसी ग्रुप ऑफ कंपनीज का। नेक्स्ट अपडेट है एनडीटीवी ने बोला गया है कि उनका जो एनडीटी बायबैक है, जो उनके फाउंडर है उन्होंने इशू किया है कि शेयर यूनिट अदानी ग्रुप को, और ये अदानी ने लेट किया है। कॉन्ग्लोमरेट स्टेप क्लोजर हो गए हैं अदानी ग्रुप जो टेक ओवर करने के लिए मीडिया फॉर्म में, और वो ट्रांसफर होंगे शेयर्स अदानी ग्रुप को, और जो कंट्रोल होगा वो ओवरऑल 29.1% का स्टेक होगा न्यूज ग्रुप में अदानी का। और ऑल्सो अदानी कंडक्ट करेंगी ओपन ऑफर रनिंग बिटवीन जो है नवंबर 22 से लेकर दिसंबर 5 में है, और वो स्टेक बढ़ के 26% होगा एनडीटीवी में। देन जो लुपिन है, लुपिन ने बोला कि उनकी ब्राजील बेस्ड यूनिट है, उन्होंने एक इंक पैक्ट साइन किया है जो अक्वायर करेंगी राइट्स 9 प्रोडक्ट्स के, जो उनकी जो सब्सिडरी है वॉश हेल्थ कंपनीज आईएनसी, और ये कंपनीज होली ओन सब्सिडरीज है ब्राजील में। ओमेड क्यूमिका इंडस्ट्रीज फार्मासिटी, उन्होंने साइन किया है कि डेफिनेटिव अग्रीमेंट जो अक्वायर करेंगी, और मतलब जो जितने भी राइट्स है 9 मेडिसिन के बीएल इंडस्ट्रिया ऑक्टा एलटीडी कंपनी से। नेक्स्ट अपडेट है जेके सीमेंट के ऊपर। जेके सीमेंट को उनके जो 4 मिलियन टन पर एनम का जो ऑपरेशन है उसके लिए परमिशन दी है, जो ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग करेंगी सेंट्रल इंडिया में। और ये कंपनी जो ग्रे सीमेंट की कैपेसिटी है वो राइज हो चुकी है 18.7 MTPA, और जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो एडिशन होगी, जो एक कंपनी के लिए अच्छा है, और उनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा। देन जो शहादेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जेके सीमेंट का वॉल्यूम ग्रोथ है नेक्स्ट 2 इयर्स में अच्छा होके वो ड्रिवन करेगा कैपेक्स कंप्लीशन को। ओवरऑल कंपनी का एम है कि वो रीच करेंगे 25 MTPA ग्राइंडिंग कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 25 तक। आदित्य बिरला फैशन और रिटेल कंपनी है, उन्होंने एक ब्रांड है पिकअप सिग्निफिकेंट, उसमें माइनॉरिटी स्टेक लिया है एक डिजिटल फर्स्ट लाइफस्टाइल ब्रांड में, और 290 करोड़ के वर्थ से। और ये एक इन्वेस्टमेंट इंक्लूड रुलिश बेवाकूफ शूनबेरी नेदरलैंड एंड बीरो एंड ये जो ये है लोकेशंस पे, और ये उसका जो डिस्क्लोज है क्वांटम मनी इन्वेस्टेड स्टेक पिकअप का वो अभी भी डिस्क्लोज नहीं किया है। देन लास्ट अपडेट है ड्रेगिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के ऊपर, जो ये कंपनी के प्लान किया कि वो एंटर करेंगी फॉरेन ड्रेगिंग मार्केट में, और इनका जो इनिशिएटिव है वो सेटअप करेगा फूड और उसके अलावा फॉरेन वेटर्स के लिए मटेरियल्स के लिए। So that's it from my end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day.